Hi guys, Assalamu alaikum. This is Nadia Hussain. You are watching my YouTube channel. आज की जो वीडियो है is a bit different and it's very interesting actually. Even though कि I'm sure इस किस्म की videos आपने और भी देखी होंगी, but today I'm going to give you, show you how to actually build your eye makeup. कि अगर आप eye makeup जो है वो एक simple सा एक आप look रखते हैं, which is going to be for like an afternoon event, कोई lunch या कोई वैसी कोई एक छोटा सा आपको कहीं रेस्टोरेंट पे कोई किसी लंच पे जाना है या किसी के गेट टुगेदर पे जाना है, पर कोई बहुत ज़्यादा फॉर्मल इवेंट नहीं है, तो उसका लुक जो है वो क्या होगा और उसी लुक को जो है वो आप किस तरीके से उसको और इन्हांस कर सकते हैं. नॉट रियली चेंजिंग योर एंटायर मेकअप बट जस्ट like adding a few things and just enhancing that same makeup. So I'm going to tell you, I'm going to give you a tutorial on how to transform your day makeup to an evening makeup. Okay, so let's start. First thing I'm going to use is the Bio Miracle Aqua Hydro Boost, जो कि soothing sherbet mist है. I am really loving this product because this is something new that was actually gifted to me, and ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, which is really hydrating. So I'm just going to kind of a few mist sprays on my face. It really helps in hydrating the skin, which is very good. चाहे वो summers हों या of course winters में तो बहुत hydration की ज़रूरत होती है, लेकिन summers में भी जो है अगर आप पूरा दिन अगर आपने मेकअप लगाया हुआ है, so it is also very essential कि आप अपनी skin को जो है वो अच्छी तरीके से hydrate करें. अगर आपकी oily skin है तो आप जो है वो oil free moisturizers इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आपकी oily skin नहीं है, अगर आपकी dry skin है, so it's more important to actually moisturize your skin. Then of course I'm also going to prime. The primer है ये मैं अपने ही brand का जो मेरा इंशाल्लाह बहुत जल्द लॉन्च होगा, वो मैं प्राइमर इस्तेमाल कर रही हूँ. एंड अ लिटिल बिट ऑफ अ डैब ऑफ द प्राइमर ऑन द पोर्स एरिया जहाँ पे पोर्स थोड़े से मेरे इनलार्ज्ड हैं, ताकि ये है कि थोड़ा सा ये पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर है. सो आई एम गोइंग टू यूज़ द पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर विच इज़ मेनली इन द टी जोन एरिया जहाँ पे मेरे इनलार्ज्ड पोर्स हैं. Okay, so primer मैंने अब लगा लिया है. I'm going to go ahead and I'm also using my own foundation, जो कि foundation जो है वो भी बहुत जल्द जो है वो launch हो चुका हुआ है in the market, and so I'm using my own foundation as well. Just a few drops of the foundation, and let's go into the foundation. Now I'm going in with my upcoming concealer as well, and थोड़ा सा जो है वो अपने अंडर आइज को जो है वो मैं हाईलाइटिंग जो कंसीलर है वो लगाऊंगी, और इसको जो है वो मैं ब्लेंड करूंगी विद अ ब्यूटी ब्लेंडर. And now to dab my under eye with some loose powder. So I'm taking a sponge and I'm just dabbing it into some loose powder, and I'm going to go into my under eye. And I'm taking a compact and I'm going to just सिर्फ एक ब्रश के साथ मैं थोड़ा सा compact को लेके overall अपने face के ऊपर spread कर लूँगी. Now I'm going to contour with my favorite Christine Face Contouring Kit 03. So again, a large forehead will be contoured just along the hairline. So that's it. Now I'm going to do my eyebrows with Bling Brow 2.
सो नाउ कम्स द फन पार्ट, क्योंकि अब जो है वो मैं जो मेरा चीक ब्लिंग हैशटैग ग्लोरियस है, मैं सिर्फ ये चीक ब्लिंग इस्तेमाल करूँगी। और चीक ब्लिंग में से जो है वो बिकॉज इट हैज़ लाइक 6 शेड्स इन इट, तो इसके अंदर से जो है वो मैं थोड़ा सा, क्योंकि मेरा आई गेस अगर कपड़ों के लिहाज से देखा जाए तो आई थिंक आई वांट टू गो फॉर लाइक अ शैम्पेन गोल्ड काइंड ऑफ अ कलर। सो ये जो कलर है वो मैं अपनी फिंगर पे लगा के मैं सिर्फ ओवरऑल अपनी पूरी आईलेट पे लगा लूँगी, ठीक है। And now I'm going to use my Bling It Eyes eyeliner, which is the eyeliner pen, ठीक है। So eyeliner अभी मैंने लगा लिया है, and I always like to tight line my eyes. Now for the other eye. Now my Blingorama mascara. Okay, now I'm applying a lip liner. And now I am applying a latte from my new nude collection of Bling It Down matte lipsticks. This is the color Latte. इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ थोड़ा सा ब्लिंग ग्लॉस विच इज जुपिटर। And now for a little bit of pink blush on. And to top it off, I'm going to be using my cheek bling, जो कि फेस हाइलाइटर हैं, जो कि है #glorious। ये जो है हाइलाइटर पैलेट मैं इस्तेमाल करूँगी, और ऑफ कोर्स आपको बहुत सी वीडियोस में भी देखा होगा आपने, बट आई लाइक टू डू इज़ दैट आई लाइक टू गो इन विद सच अ फ्लफी काइंड ऑफ अ ब्रश, और मैं सारे कलर्स में जो हूँ वो थोड़ा सा डैब कर लेती हूँ, एंड आई जस्ट रन द ब्रश थ्रू ऑल द कलर्स, एंड देन आई जस्ट अप्लाई द हाइलाइटर। Okay, so this is my सिंपल डे लुक, जो कि आइज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस नहीं है, सिर्फ वन शेड लगाया है, आईलाइनर लगाया, मस्कारा लगाया है, एंड उसके अलावा जो बाकी जो रेगुलर मेकअप में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो तो खैर लगाया ही है, कंटूर एंड ब्लश ऑन एंड हाइलाइटर एंड लिपस्टिक एंड ऑल दैट। बट आई मेकअप जो है वो बहुत सिंपल है। अब इसी आई मेकअप को जो है वो किस तरीके से जो है वो आप उसको इन्हांस कर सकते हैं, लेट्स गो इनटू दैट। इसके अंदर जो है वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ एक काजल आई पेंसिल, जो कि एक वाटरप्रूफ आई पेंसिल है, कोई भी किसी भी ब्रांड की आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी मेकअप के ऊपर जो है वो मैं अपना थोड़ा सा कॉर्नर बनाऊंगी, एंड देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट एनहांसिंग द मेकअप। सो आई एम गोइंग टू मेक द कॉर्नर राइट हियर वेयर माई क्रीज इज, ठीक है। यहाँ पे जो मेरी क्रीज आ रही है, यहाँ पे मैं क्रीज के साथ जो है वो मैं इसको ब्लैक पेंसिल के साथ मैं थोड़ा सा इन्हांस करूंगी, एंड क्योंकि जहाँ पे मेरा ये आई लाइनर आ रहा है, इसी के साथ जो है वो मैं इसको हल्का सा एक्सटेंड करके आई एम गोइंग टू मेक द
black shadow over here. और इसके लिए ज़रूरी है एक राउंड टिप्ड ब्रश, जो कि आपका सॉकेट के लिए जो है वो स्मच करने के लिए एक राउंड टिप्ड ब्रश जो है वो बहुत ज़रूरी है. Going in with the other eye. थोड़ा सा जो है वो अंडर आइज को और डेफिनेशन देने के लिए आई एम गोइंग इन अगेन विथ द ब्लैक आई पेंसिल, और इसको फिर मैं स्मच करूंगी विथ द कॉन्टोर किट कलर. तो मैं सिर्फ कॉर्नर में जो है वो ये यहाँ तक जो है सिर्फ कॉर्नर आउटर जो अब मेरा वी बन रहा है वहाँ तक जो है मैं ब्लैक लेके आई हूँ, एंड इसको थोड़ा सा मैं स्मच कर रही हूँ. और बाकी के लिए आई एम गोइंग टू टेक दिस लाइटर कलर ऑफ द contour kit and I'm going to smudge my entire lower lid. अब ब्राउ बोन के नीचे मैं थोड़ा सा लाइटर कलर लगाऊंगी, विच इज़ गोइंग टू बी अगेन फ्रॉम माई चीक ब्लिंक, और ये जो गोल्ड कलर है ये मैं अपने ब्राउ बोन के नीचे लगाऊंगी. और फिर इसी में से जो ये शैम्पेन टाइप कलर है ये मैं अपने इनर कॉर्नर पे लगाऊंगी. और अब मैं आई ब्लिंक गोल्ड जो है वो उसको अपने लिड के ऊपर जो है वो सिर्फ लिड के ऊपर लगाऊंगी. So right now I have done the gold. I don't really feel that I want to apply more. But मैं जो हूँ वो अपना eyeliner फिर से थोड़ा सा इसको enhance करूँगी, और using of course my Bring It Eyes eyeliner. Wing आपको कैसे extend करना है कि जो आपका अगर already आपने eyeliner लगाया हुआ है तो आपको जो है यहाँ से lower जो आपका जो ये line जा रही है जो बिल्कुल आपकी लैश लाइन के बराबर जा रही है उसको आपको थोड़ा सा और एक्सटेंड करना है. ठीक है, तो अब ये आपकी आई का जो कॉर्नर है उससे थोड़ा सा और लंबा इन्हांस्ड हुआ हुआ है. ठीक है, और थोड़ा सा बाहर की तरफ आया हुआ है. फिर आप जो है वो ऊपर का जो हिस्सा है उसको आप बाहर की तरफ लेके जाएंगे. So I am taking out my eyeliner all the way till here. ठीक है, और फिर ये जो नीचे और ऊपर का जो हिस्सा है उसको आप कनेक्ट कर लेंगे और उसके अंदर कलर कर लेंगे. सो ये आपका बन गया ओवर एक्सटेंडेड आईलाइनर. ठीक है, और ये आंख को जो है वो काफ़ी इन्हांस कर देता है, आंख को थोड़ा सा बड़ा दिखाता है. सो दिस इज़ द ओवर एक्सटेंडेड आईलाइनर. और अब जो है वो मैं दूसरी आंख का आईलाइनर करती हूँ.
And that was the transformation from my daytime simple look to a more dramatic evening look. Okay, so I hope you enjoyed today's video, and please subscribe to my channel, hit the bell icon, and this is me, Nadia Hussain, signing off. Catch you in the next video. Bye.